बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे थर्मोडायनामिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट। तो आइए इनका क्विक रिव्यू लेते हैं और फिर इसी के बेस पर जो है हम स्टेप बाय स्टेप MCQs को सॉल्व करेंगे। सो हीट कैपेसिटी क्या होता है? सिंपली डिफाइन एज हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू द हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय a unity means a 1 Kelvin unit temperature. Its unit is joule per Kelvin। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की मिसाल के तौर पर हमारे पास टेम्परेचर है T केल्विन। अब अगर इस ऑब्जेक्ट को हम हीट प्रोवाइड करें और इसके टेम्परेचर में 1 केल्विन इंक्रीज आ जाए, मीन्स दिस T के कन्वर्ट टू T के +1 केल्विन। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अगेन हमारे पास ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पर इसका टेम्परेचर है 400 केल्विन। अगर इसको हम हीट अप्लाई करें और इसकी टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाए 401 केल्विन को, तो जो हीट हमने इस ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड किया है इसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी, विच इज़ डिनोटेड बाय एस and defined as heat energy required to rise the temperature of an object up to 1 Kelvin or 1 degree centigrade. So this is the expression for heat capacity. Next one, specific heat capacity क्या होता है? The specific heat of substance is the amount of heat required to rise the temperature of a unit mass of the substance through 1 degree centigrade or 1 Kelvin is known as specific heat of the substance. Its unit is calorie per gram per degree centigrade और joule per kilogram per Kelvin। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसका जो मास है वो हमारे पास डिफाइन है, उसका अमाउंट है 1 किलोग्राम, करेक्ट। अब अगर इसके हमारे पास जो टेम्परेचर है, इनिशियल टेम्परेचर है T केल्विन। अब अगर इसको हम हीट सप्लाई करें और इसकी टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट हो जाए T केल्विन +1 Kelvin, means a temperature increase up to 1 Kelvin, then such amount of heat supplied to this object is known as specific heat। मिसाल के तौर पर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसका मास है 1 किलोग्राम, इसका टेम्परेचर है सपोज 400 केल्विन। अब अगर इसको हम हीट सप्लाई करें और इसकी टेम्परेचर हो जाए मिसाल के तौर पर 401 केल्विन, तो जो हीट हमने इस ऑब्जेक्ट को सप्लाई किया है उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय C एंड इक्वल टू हीट कैपेसिटी डिवाइड बाय मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर यहाँ पर हम हीट कैपेसिटी की वैल्यू को पुट करें विच इज इक्वल टू del Q by del T, सो C बिकम C इक्वल टू 1/m del Q by del T, where Q is heat, its unit is joule or calorie, mass unit is kilogram and temperature unit is Kelvin. So the unit of specific heat is joule per kilogram per Kelvin. Remember, it depends on the nature of the substance and its temperature। अब ये हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। मीन अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर वाटर हो और उसकी टेम्परेचर हमारे पास हो 400 केल्विन, करेक्ट, ये वाटर का टेम्परेचर है 400 केल्विन। अब अगर हमारे पास मिसाल के तौर पर कोई और मटेरियल हो, मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस हो और इसका टेम्परेचर हो 400 केल्विन, दोनों का नेचर डिफरेंट है, एक हमारे पास लिक्विड है, एक हमारे पास गैस है। अब अगर इसकी हीट को, इसकी टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करें अप टू 1 केल्विन, सो इट बिकम 401 केल्विन। अब अगर इसकी टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें अप टू 1 केल्विन, सो इट बिकम 401 केल्विन। तो याद रखिए इन दोनों केसेस में इसके लिए जो हीट रिक्वायर्ड होगी to convert the temperature from 400 Kelvin to 401 Kelvin, और इसके लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट, हीट रिक्वायर्ड होगी टू कन्वर्ट इस टेम्परेचर फ्रॉम 400 केल्विन टू 401 केल्विन, वो हमारे पास डिफरेंट होगी, क्योंकि इन दोनों का जो बॉन्ड नेचर है वो हमारे पास डिफरेंट है। अब सिमिलरली ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी ऑक्सीजन गैस हो और इसका इनिशियल टेम्परेचर हो मिसाल के तौर पर 300 केल्विन लेट सपोज, और हमारे पास एक दूसरा ऑक्सीजन गैस हो ये वाला
करेक्ट, और इसका टेम्परेचर हमारे पास 401 केल्विन या 400 केल्विन। अब अगर इसकी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें, कन्वर्ट दिस टेम्परेचर टू 301 केल्विन, तो इसके लिए हमारे हीट को सप्लाई करना होगा इस ऑक्सीजन को। इसी तरह अगर इस 400 केल्विन जो टेम्परेचर है ऑक्सीजन गैस का, अगर इसको हम इंक्रीज करना चाहते हैं अप टू 401 केल्विन, तो याद रखिए इन दोनों के लिए हमारे पास जो हीट रिक्वायर होगी वो डिफरेंट होगी। सो इट मीन्स द स्पेसिफिक हीट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एज वेल एज इट्स इनिशियल टेम्परेचर। Next one is Moser specific heat capacity. The amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of a substance by unit E means a unit temperature is called Moser specific heat capacity of the substance. In other words, heat capacity per mole is known as Moser specific heat capacity or Moser heat capacity. इससे पहले हमने जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को पढ़ा था, लेकिन अब हमने जो है अपनी टर्मिनोलॉजी को चेंज करके इसको हमने कन्वर्ट किया मोलर स्पेसिफिक कैपेसिटी। सो सिंपली मीन्स अगर स्पेसिफिक हीट में हम मास की जगह नंबर ऑफ मोल को रख दे, तो इस किस्म के जो एक रेशो होगी हमारे पास हीट कैपेसिटी और नंबर ऑफ मोल की जो रेशो होगी उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। और मोलर स्पेसिफिक हीट जो है यूजुअली हम यूज़ करते हैं फॉर गैसेस। मीन्स the specific heat expression in terms of mass will be this one, and the specific heat expression in terms of mole will be equal to this one. The unit of this specific heat is joule per kilogram per Kelvin, and the unit of this molar specific heat is joule per mole per Kelvin. Now the specific heat of gas is divided into two groups. One is known as molar heat capacity at constant pressure, that is equal to Cp equal to del Q divided by N del T constant pressure, and the other molar heat capacity denoted by Cv, which is known as molar heat capacity at constant volume Cv, which is equal to del Q divided by number of mole a change in temperature into constant volume. अब Cp हमारे पास क्या होता है? The amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of a substance up to 1 Kelvin at constant pressure is known as Cp. Similarly, Cv हमारे पास क्या होता है? The amount of heat required to rise the temperature of 1 mole of a substance up to 1 Kelvin or 1 degree centigrade is known as Cv. Now, some important point about molar specific heat. As we know that C equal to del Q divided by N del T. अगर हमारे पास कोई भी सिस्टम हो उसको हम ना हीट सप्लाई करें और ना उसे हीट जो है एमिट करे या उसे हीट जो है इवॉल्व करे, हीट उसको खारिज करे, तो इस किस्म के प्रोसेस को हम बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। सो एडियाबैटिक प्रोसेस दैट प्रोसेस for which del Q equal to 0. So specific heat in case of adiabatic process will be equal to 0. Correct? Similarly, in case of isothermal process that process in which temperature remain constant, हमारे पास कोई भी एक सब्सटेंस हो उसको हम हीट सप्लाई करें लेकिन उसके टेम्परेचर हमारे पास कांस्टेंट रहे, मीन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज ना आए, तो इसका स्पेसिफिक हीट हमारे पास क्या होगा? C equal to del Q divided by N del T. Or for a case of isothermal, C equal to del Q divided by 0 because the change in temperature for isothermal process is 0. So this approach to infinity. So याद रखिए for adiabatic process the specific heat, molar specific heat equal to 0, and for isothermal process the molar specific heat C equal to infinity. Point number 3, the molar specific heat may be positive and the molar specific heat may be negative. अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई भी एक सिलेंडर है या इसका जो है मूवेबल पिस्टन है, अगर इसको हम यहाँ से हीट सप्लाई करें तो ज़ाहिर बात है ये जो गैस है इन द सिलेंडर इस हीट को ऑब्जर्व करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ से जो है इसकी एक्सपेंशन करें, इस पिस्टन को अपर की तरफ मूव करें, तो यहाँ से जो है ये एक्सपेंड होगा, मीन्स यहाँ पर जो है हीट एब्जॉर्ब होगा, मीन्स हीटिंग प्रोड्यूस होगा। लेकिन वी नो दैट बाय एक्सपेंशन द गैस विल बी कन्वर्ट टू कूल। सो अगर इसको हम स्लोली जो है एक्सपेंड करें तो यहाँ पर जो है ये एक्सपेंशन की वजह से यहाँ पर कूलिंग अगर होगा। अब अगर हमारे पास ये हीट एब्जॉर्प्शन का जो रेट है वो ज़्यादा हो और ये एक्सपेंशन का जो रेट है हमारे पास कम हो, तो मीन्स ये जो हीट एब्जॉर्प्शन है ये डोमिनेंट होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो हीट जो होगा, हमारे पास जो टेम्परेचर चेंज होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। सो C equal to del Q divided by N del T. N is the number of mole in the cylinder. Del T means change in temperature. Del Q means heat absorption. So in this case, the molar specific heat will be positive. Similarly, the molar specific heat may be negative. अगर यही सिस्टम है हमारे पास, यहाँ से बॉटम में ये हीट को एब्जॉर्ब करता है और यहाँ से जो है हम पिस्टन को अपर की तरफ मूव करें, लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम इस पिस्टन को अपर की तरफ मूव करते हैं और यहाँ जो एक्सपेंशन का
रेट हो, मीन्स एक्सपेंशन का जो रेट हो हमारे पास ज़्यादा हो, और हीट एब्जॉर्प्शन का जो रेट हमारे पास कम हो, तो फिर हमारे पास इनसाइड जो गैस है इनसाइड द सिलेंडर, वहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर में कूलिंग अकर होगी. सो इट मीन्स द टेम्परेचर विल बी डिक्रीज या टेम्परेचर विल बी नेगेटिव. सो व्हेन C equal to del Q by N into minus del T, when temperature is negative, change in temperature is negative, the specific heat will be negative. So it means the specific heat may be positive if the absorption rate is dominant, and the specific heat will be negative if the expansion rate is dominant. Now, the relation between specific heat at constant pressure and specific heat constant volume, that is equal to Cp minus Cv equal to R, where R is known as universal gas constant, which value is 8.3 joule per mole per Kelvin. This formula is known as Mayer formula. Similarly, the ratio between Cp and Cv is known as gamma. This is called specific heat ratio. So gamma equal to Cp by Cv. Now, सम अदर रिलेशन, अगर हमारे पास जो है किसी भी सिस्टम का गेमा मालूम हो तो उसे हम सी मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला. मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट रेशो माइनस 1. सिमिलरली द Cp इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट रेशो मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइड बाय गेमा माइनस 1. अगर हमें यहाँ पर गेमा मालूम हो तो हम Cp को मालूम कर सकते हैं. इस तरह अगर हमारे पास गेमा मालूम हो तो हम Cp को मालूम कर सकते हैं. So these two are the important relation between Cp and Cv and gamma. Now some well-known value of Cp and Cv and internal energy per gases. तो याद रखिए हमारे पास इंटरनल एनर्जी है, ये हमारे पास स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमारे पास स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये हमारे पास जो है स्पेसिफिक हीट रेशो है. अगर हमारे पास कोई भी मानो एटॉमिक गैस हो लाइक हीलियम, नियान, अर्गान, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वो बराबर होगी 3/2 R into T, where T is the temperature of the monoatomic gas, and its Cv equal to 3/2 R, its Cp pi/2 R, and its gamma equal to 1.67. Similarly, for diatomic gas, hydrogen gas, oxygen gas, nitrogen gas, urine, total internal energy equal to pi/2 RT. The Cv is pi/2 R, the Cp is 7/2 R, and the gamma is 1.4. And for polyatomic gas, CH4, carbon dioxide, etc., the internal energy equal to 3 RT, Cv 3R, and Cp 4R, and gamma equal to 1.33. So these are some important values which used in various MCQs. The next one, if we have n number of mole of gas, then the internal energy at temperature T per n number of mole equal to U equal to number of mole Cv molar specific heat multiplied by temperature. So this is the formula for internal energy. In terms of N and Cv and temperature are for constant volume heat added to a system. हमारे पास कोई भी एक सिस्टम हो, कोई भी सिलेंडर हो, उसका पिस्टन फिक्स हो और उसको हम हीट सप्लाई करें, तो जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो बराबर होगा del Q into V, means volume is constant equal to NCV into del T, and the heat absorbed by a gas at constant pressure del Qp equal to NCP del T. The next one, specific heat of solid. याद रखिए हमारे पास अगर कोई भी सॉलिड हो तो उसका जो स्पेसिफिक हीट होता है एट सर्टेन टेम्परेचर विच इज नोन एज डिवाइड टेम्परेचर, वो बराबर होता है 3R के. When a solid is heated through a small range of temperature, its volume almost constant. Therefore, specific heat of a solid may be called its specific heat at constant volume. तो याद है कि हमारे पास जितने भी सॉलिड होते हैं अगर उसके हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो उसकी वॉल्यूम में बहुत कम चेंज अगर होता है, जिसको हम इग्नोर करते हैं, तो इसी वजह से इसकी स्पेसिफिक हीट को हम बोलते हैं Cv. फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर एट T इक्वल टू 0 केल्विन Cv टेंड्स टू 0. ग्राफ हमें शो करता है हमारे पास कोई भी सॉलिड हो, अगर उसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो तो उसका जो स्पेसिफिक हीट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा. लेकिन अगर उसकी सॉलिड की हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाए तो इसकी स्पेसिफिक हीट में भी इंक्रीज आएगी. Correct? And up to some certain temperature which is known as Debye temperature, which is also equal to room temperature, the specific heat of the solid remain constant. Means अगर हमारे पास कोई भी solid हो और उसकी टेम्परेचर हमारे पास रूम टेम्परेचर से ज़्यादा हो तो उसका जो स्पेसिफिक हीट होगा वो हमारे पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा और उसकी जो वैल्यू होगी पर एनी टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 3R. With rise in temperature, Cv increases, and at a particular temperature called Debye temperature, it becomes constant, that is 3R, and R equal to 8.3 joule per mole per Kelvin. So by putting the value of R, we have 1025 joule per mole per Kelvin.
फॉर मोस्ट ऑफ द सॉलिड डिवाइड टेम्परेचर इज क्लोज टू द रूम टेम्परेचर। अब याद रखिए हमारे पास जो है ये डिवाइड टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, मीन्स इसकी जो टेम्परेचर है वो है हमारे पास 298 केल्विन। अब अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड हो और उस सॉलिड की टेम्परेचर हमारे पास हो 310 केल्विन हो, और फिर वही सॉलिड हो उसका टेम्परेचर हमारे पास 330 केल्विन हो, फिर वही सॉलिड हो उसका टेम्परेचर हमारे पास 350 केल्विन हो, तो याद रखिए अगर इस सॉलिड का जिसका टेम्परेचर 298 केल्विन है, अगर हमें इंटरेस्टेड है कि इसके टेम्परेचर को 299 करे, तो याद रखिए हमें कितना हीट सप्लाई करना होगा, 25 जूल पर मोल पर केल्विन। सिमिलरली या पर मोल 25 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। या हमारे पास कोई भी सॉलिड है मिसाल के तौर पर, और उसका जो मास है 1 किलोग्राम है, उसका टेम्परेचर है 310 केल्विन। अब अगर हमें इंटरेस्टेड है कि इसके टेम्परेचर को 311 केल्विन करे, तो हमें कितना हीट सप्लाई करना होगा, 25 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इस तरह अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट हो उसका टेम्परेचर हमारे पास 330 केल्विन हो, और हमें इंटरेस्टेड है कि इसके टेम्परेचर को 331 केल्विन करे, तो हमें कितना हीट सप्लाई करना होगा, 25 जूल per kilogram per Kelvin. So this was the quick review of specific heat and heat capacity, and now on the basis of these two topics we solve various MCQs step by step. So आइए start करते हैं। MCQs number first, if 10,000 calorie of heat is added to 4 mole of a monoatomic gas without changing its volume, then change in temperature of the gas will be what? 233 Kelvin, 833 Kelvin, 123 Kelvin या 433 Kelvin. So we know that for monoatomic gas Cv equal to 3 by 2R, putting the value of R, that is 8.31 joule per mole per Kelvin. Now convert this joule to calorie. So 1 joule equal to 1 over 4.18 calorie. So Cv becomes 3 calorie per mole per Kelvin. Now the change in temperature when n mole of the gas is given q calorie of heat at constant volume equal to this one. So heat absorbed by the gas at constant volume Q equal to NCV del T. Now solve this for temperature del T equal to Q divided by NCV, putting the value of Q NCV and solve step by step. We obtained 833 Kelvin. So this will be the change in temperature of monoatomic gas if it absorbed 10,000 calorie heat. So the correct option is option B. MCQs number 2. Water is normally used as a coolant liquid to take away heat from running engine because of its high density, high specific heat, low specific heat, high normal conductivity. याद रखिए हमारे पास जो वाटर होता है उसका स्पेसिफिक हीट बराबर होता है 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। सो इसका जो स्पेसिफिक हीट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सो इसका मतलब ये है कि ये हीटिंग को एब्जॉर्ब करने के लिए एक अच्छी मटेरियल है, एक अच्छी चीज़ है। इस हीट को जो है एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी इसकी बहुत ज़्यादा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। MCQs number 3. The molar heat capacity of chromium at room temperature is 24 joule per Kelvin per mole and its relative atomic mass is 52. What is the approximate specific heat capacity of chromium? That is 0.46 joule per Kelvin per kilogram, 1.2 joule per Kelvin per kilogram, 2.2 joule per Kelvin per kilogram, and 460 joule per Kelvin per kilogram. As the molecular mass of the chromium or 1 mole is equal to 52 gram, given its molar heat capacity is 24 joule per Kelvin per mole per 52 gram. Its specific heat capacity means the heat required to rise the temperature of 1 kilogram of a substance, that is 24 divided by 52 joule. हमें मालूम है कि हमारे पास इसकी अमाउंट कितना हो, 52 ग्राम हो या 1 मोल हो, तो इसके लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, that is 24 जूल पर केल्विन। अब अगर इस ग्राम को हम एक्सप्रेस करें किलोग्राम में, सो दिस बिकम 24 डिवाइड बाई 52 इंटू 10⁻³ एंड सॉल्व करें इसको स्टेप बाय स्टेप। सो वी ऑब्टेन 461.5 जूल पर केल्विन पर किलोग्राम। सो याद रखिए हमारे पास क्रोमियम हो और उसकी जो हीट कैपेसिटी हो, हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी हो 24 जूल पर केल्विन पर मोल हो। अब अगर इसकी हमारे पास अमाउंट हो 1 किलोग्राम और हमें इंटरेस्टेड है कि इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करें अप टू 1 केल्विन, सो वी नीड टू सप्लाई
461.5 joule heat. So the correct option is option what? Option D. Option D is correct option. MCQ number 4. The specific heat at constant pressure is greater than that of the same gas at constant volume because at constant volume work is done in expanding the gas. Wrong. At constant pressure work is done in expanding the gas. Correct option is B. The Cp is greater than C because at constant pressure work is done in expanding the gas. MCQ number 5. If Cp greater than Cv because in the case of Cp again वही question है, heat is needed to do external work. The correct option is option B. Which of the following statement regarding specific heat capacity of a substance are correct? It depends on mass of the substance, nature of the substance as well as temperature of the substance, and option D all. तो याद रखिए हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट के लिए जो है मास कांस्टेंट रहेगा, मीन मास फिक्स होता है 1 किलोग्राम. So specific heat C equal to del Q divided by m del T. So this will be constant because in case of specific heat mass always take 1 kilogram. So it means C equal to del Q by del T. So it means the specific heat can depend on the nature of the substance as well as temperature of the substance. क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है हमारे पास मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन गैस है और दूसरा हाइड्रोजन गैस है, दोनों का टेम्परेचर हमारे पास क्या है 300 केल्विन है. अगर हमें इंटरेस्टेड है इसके टेम्परेचर को 301 केल्विन करें तो हमें जो है डिफरेंट हीट इसको सप्लाई करना होगा क्योंकि उन दोनों का जो बॉन्ड नेचर है वो डिफरेंट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. द स्पेसिफिक हीट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सब्सटेंस एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस. MCQ number 7. The molar specific heat of an ideal gas at constant pressure and volume are denoted by Cp and Cv, and gamma equal to Cp by Cv, and R is a universal gas constant. Then Cv is equal to what? 1 plus gamma divided by 1 minus gamma. Option B R divided by gamma minus 1. Option C gamma minus 1 by R, and option D gamma R. So we know that Cp minus Cv equal to R. This can be written as in this form, or Cp equal to gamma into Cv. Simplify this step by step. We obtain the molar specific heat at constant volume is equal to universal gas constant divided by gamma minus 1, where gamma is the specific heat ratio. So the correct option is option B. MCQ number 8. What will be the value of Cv if specific heat ratio for a sample of gas is 1.3? तो हमने मालूम करना है Cv को और यहाँ पर हमें मालूम है gamma equal to 1.3. So we know that Cv equal to R divided by gamma minus 1. Putting the value of R and gamma and simplify this, we obtain 27.6 joule per mole per Kelvin. So the correct option is option B. MCQ number 9. The sprinkling of water reduces slightly the temperature of a closed room because what? Evaporation causes cooling. As the latent heat of vaporization of water is large, it will absorb lots of heat from the room and hence the temperature of the room will be decreased due to what? Due to evaporation. MCQ number 10. The molar specific heat at constant pressure of an ideal gas is 7 by 2R. The ratio of specific heat at constant pressure to that of constant volume will be what? तो याद रखिए अगर हमारे पास कोई भी एक गैस हो उसका Cp बराबर हो 7/2R के, तो याद रखिए गैस जो है हमारे पास कौन सा गैस होगा? हमारे पास डाई एटॉमिक गैस होगा और डाई एटॉमिक गैस के लिए Cp बराबर होता है 7/2R और C बराबर होता है 5R/2. सो अगर इस 7/2R को हम इससे डिवाइड करें so we obtain Cp by C equal to 7/5. तो याद रखिएगा हमारे पास Cp बराबर हो 7/2R के तो C बराबर होगा 5/2R. इस तरह हमारे पास Cp बराबर हो 5/2R तो C बराबर होगा 3/2R. करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? 7/5. दैट इज ऑप्शन A. MCQ number 11. The amount of heat required to rise the temperature of a body through 1 Kelvin is known as what? The amount of heat required to rise temperature of a body through 1 Kelvin is called its latent heat.
thermal capacity, entropy या specific heat. So the correct option is heat capacity or thermal capacity, because for specific heat the amount should be clear. The amount should be 1 kilogram. Here 1 kilogram not present, so it means this definition valid for thermal capacity or heat capacity. MCQs number 12. Which of the following is the unit of specific heat? So the unit of specific heat is joule per kilogram per degree centigrade या joule per kilogram per Kelvin. So the correct option is option B. This one, sorry. This is option B. This is C, B, this one. Boiling water is changing into steam. Under this condition, the specific heat of water will be what? तो याद रखिए हमारे पास वाटर हो, करेक्ट, और उसके टेम्परेचर हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो, तो याद रखिए इस 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर जो होता है वो वेपर के फॉर्म में भी होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है. मीन्स का टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है? कांस्टेंट होता है. सो द स्पेसिफिक हीट एट बॉइलिंग टेम्परेचर विल बी व्हाट? एट बॉइलिंग पॉइंट विल बी व्हाट? C equal to del Q divided by m del T. As in case of boiling, the temperature is constant, that is del T equal to 0. No change in temperature will occur, so it means this is isothermal process. अगर हम यहाँ 0 put करें, so this approach to infinity. So in case of boiling of water, such that water is changed to steam, the specific heat approach to infinity. So the correct option is option C. MCQs number 14. Which of the following is a correct relation? This one. A specific heat of a substance is infinite. It means the process is isothermal. So the correct option is option C. MCQ number 16. Which of the following have same dimensional formula? So this one, because we know that Cp minus Cv equal to R. ये तीनों जो है एक फार्मूले में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो इन तीनों का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा, यूनिट होगा, वो सेम होगा. So the correct option is option B. The ratio of Cp over Cv equal to gamma for monoatomic gas equal to what? 1.67 for monoatomic gas, 1.4 for diatomic gas, and for polyatomic gas is 1.2. So the correct option is option A. For 1 mole of solid at constant pressure, how C is related to R? तो याद रखिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्विक रिव्यू में. हमारे पास जो सॉलिड होता है उसका स्पेसिफिक हीट क्या होता है? वो कांस्टेंट होता है और बराबर होता है 3R का. सो C इक्वल टू 3R. सो दिस इज द स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड एट एनी टेम्परेचर, मीन्स एट above desired temperature or above room temperature, the solid having the specific heat C equal to 3R. ग्राफ ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर मोनोएटॉमिक गैस इज व्हाट? तो याद रखिए हमारे पास जो मोनोएटॉमिक गैस होता है उसका C बराबर होता है 3/2R के. तो ये भी हमारे पास कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है. सो इट्स ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C. दिस वन. MCQs number 20. If for hydrogen Cp minus Cv equal to small m and for nitrogen Cp minus Cv equal to small n, where Cp and Cv refer to specific heat per unit mass respectively at constant pressure and at constant volume, then the relation between m and n, where molecular weight of hydrogen is 2 and molecular weight of nitrogen is 14. So n equal to 14m, n equal to 7m, m equal to 7n, and m equal to 14n. So we know that Cp minus Cv equal to m, but for hydrogen gas molecular mass m1 equal to 2, and Cp minus Cv equal to n, but for nitrogen gas molecular mass or weight equal to 14. Now for hydrogen Cp minus Cv equal to 1 over m1 dq by dt. क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो Cp है और Cv है हमारे पास स्पेसिफिक हीट है पर यूनिट मास के, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एन टर्म ऑफ मास 1 ओवर m1 dq by dt. अब अगर ये Cp Cv हमें मालूम करना हो एन टर्म ऑफ स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मोल, तो यहाँ पर फिर हम मोल पुट करेंगे. सो 1 ओवर m1 dq by dt इक्वल टू स्मॉल m. सिमिलरली स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv इक्वल टू 1 ओवर m2 dq by dt, वेयर दिस शो स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास इक्वल टू n. नाउ dividing equation 2 by 1 and rearrange, we obtain m equal to 7n. So the correct option is option C. MCQs number 21. For diatomic gas, which of the following statement is correct? Cv equal to 3R by 2? No.
per diatomic gas Cv equal to pi r by 2 and Cp equal to 7 r by 2. This is correct. Per diatomic gas Cp equal to 7 r by 2. So this is the correct option, option B. MCQs number 22. For hydrogen gas Cp minus Cv equal to A and for oxygen gas Cp minus Cv equal to B, where Cp and Cv being molar specific heat, then the relation between A and B will be what? इससे पहले हमने मालूम किया था कि हमारे पास Cp Cv जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मास होता है. अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास जो Cp Cv है ये स्पेसिफिक हीट पर यूनिट मोल है. सो पर हाइड्रोजन Cp minus Cv equal to 1 over n dq by dt equal to A, and per oxygen Cp minus Cv equal to 1 over n dq by dt equal to B. So per molar specific heat, this should be 1 and this should be 1. So dividing again 2 by 1 and rearrange, we obtain A equal to B. So the correct option is option D. MCQ number 23. For a gas R divided by Cv equal to 0.67, the gas will be what? Diatomic, monoatomic या polyatomic. So याद रखिए परमाणुatomic we know that Cv equal to 3 by 2 R. So R as it is, और इस Cv की जगह अगर हम 3 by 2 R पुट करें और इसको सिंप्लीफाई करें, we obtain 0.67. So R over Cv equal to 0.67. This ratio is correct only for monoatomic gas. So the correct option is option B. Question number 24. Sorry. MCQs number 24. We have a sample of gas that is X, which will be at specific heat at constant volume. 1, 0.53, 0.8, 2.5. So याद रखिए specific heat ratio always greater than 1. So the correct option is option D. MCQs number 25. The molar specific heat at constant pressure of an ideal gas is 7 by 2 R. The ratio of specific heat at constant pressure to that of constant volume will be what? So याद रखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमारे पास जो है मोलर स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट प्रेशर जो है 7 by 2 R के बराबर है. तो याद रखिए Cp जो है मोलर स्पेसिफिक हीट Cp जो है 7 by 2 R के बराबर होता है पर what? Per diatomic gas. So similarly the Cv per diatomic gas is pi by 2 R. So Cp by Cv, this is diatomic gas 7 by 2 R Cp, and this is diatomic gas Cv. So by rearrange this, we obtain 7 by 5. So the correct option is option C. So this is the ratio between Cp and Cv per diatomic gas. MCQ number 26. If Cp and Cv are a specific heat capacity at constant pressure and constant volume respectively, then for adiabatic process of ideal gas, PV power gamma equal to constant. याद रखिए हमारे पास बॉयल लॉ है for what? For adiabatic process, और बॉयल लॉ जो होता है for isothermic process which is equal to PV equal to constant. So this is known as adiabatic boil law. MCQ number 27. A gas is taken through a number of thermodynamic states. What happened to its specific heat? Always constant, increase, decrease. It can have any value depend upon the process of the heat absorbed or evolved. Yes, this one is correct. Heat capacity may be positive, may be negative, may be zero, and may be infinite, as we discussed already in quick review. MCQ number 28. The quantity of heat required to rise 1 mole of a monoatomic gas through 1 degree centigrade at constant pressure is known as 2.5 R. That is Cv equal to 3 by 2 R, 1.5 R, and Cp equal to pi by 2 R, 2.5 R. So याद रखिए हमारे पास कोई भी गैस हो, कोई भी मोनोएटॉमिक गैस हो, और हम इंटरेस्टेड है कि इसके स्पेसिफिक हीट में हम इसके टेम्परेचर में हम 1 डिग्री इंक्रीज लाए, तो हमें कितना हीट प्रोवाइड करना होगा? 2.5 R. 2.5 R मीन्स 8.31 जूल, 8.3. So 2.5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8.3 से. So this will be the heat required per monoatomic gas. So the correct option is option B. The molar specific heat at constant pressure per monoatomic gas is 2.5 R. MCQ number 29. If Cp and Cv denote the specific heat of nitrogen per unit mass at constant pressure and constant volume respectively, then Cp minus Cv equal to 28 R, Cp minus Cv R by 2. So again Cp minus Cv equal to R, but for a case of specific heat per unit mass, we divide both sides by mCp by m minus Cv by m R by m. So this is known as specific heat per unit mass at constant pressure. This is known as specific heat
per unit mass at constant volume per nitrogen, and R as it is, and mass of the molecular mass of the nitrogen is 14. So this become R by 14. So the correct option is option C. MCQ number 30. For a certain gas, the ratio of specific heat is given by 1.5. For this gas, CV will be what? This one, this one, this one. So we know that CV equal to R divided by gamma minus 1, putting the value of gamma and R. So we obtain CV equal to 2R. So the correct option is option C. If R is the molar gas constant and gamma equal to Cp by Cv, then Cv equal to what? So again, this is our Cv and this is known as our Cp. Cp बराबर होता है in term of gamma, gamma R divided by gamma minus 1, और C बराबर होता है R divided by gamma minus 1 के. The unit of heat capacity of a substance will be what? Joule per Kelvin. This is the unit of what? This is the unit of specific molar specific heat, and this is the unit of heat capacity. MCQ number 33. A gas has one specific heat, two specific heat, three specific heat, and finite. So we know that a gas having two specific heat, that is Cp and Cv. So all gases having two specific heat, that are Cp and Cv, while solid having only one specific heat, that is Cv. Which of the following solid have large specific heat above room temperature? So we know that all solid having same specific heat above room temperature. So iron, cobalt, and copper all have same specific heat. So all these solids, iron, cobalt, and copper, have same specific heat, which value is almost 25 joule per mole per Kelvin. So the correct option is option D. MCQ number 35. Which of the following have large value of specific heat ratio? तो याद रहे कि हमारे पास जो फूरियर अटॉमिक गैस है उसके लिए स्पेसिफिक हीट रेशो बराबर होता है ऑलमोस्ट 1.2 के, डाई का बराबर होता है 1.4 का, और मानो का बराबर होता है 1.6 का. सो xenon is a polyatomic gas, so its specific heat ratio magnitude will be large. MCQ number 36. The Cp minus Cv equal to R equation is also known as Boyle equation, Charles equation, Mayer equation, or Joule equation. So this was derived by Mayer, so it is known as Mayer equation or Mayer formula. MCQ number 37. A sample of gas X has specific heat ratio 1.2. What will be its Cp? So this is our gamma. So Cp equal to gamma R divided by gamma minus 1. Putting the value of gamma and R and simplify, we obtain 50 joule per mole per Kelvin. So the correct option is option C. MCQ number 38. A 4 mole of gas having Cp equal to 2.5 joule per mole per Kelvin and 200 joule heat absorbed, then its change in temperature will be what? So again, heat absorbed equal to Ncp dt. Solve this per temperature, we obtain 20 Kelvin. So the correct option is option B. MCQ number 39. A 2 mole of gas having Cv equal to this one and 100 joule heat absorbed, then change in temperature will be what? So we have Cv equal to this one. So del Q V equal to Ncv dt. Putting the values of all variable and simplify step by step, we obtain 33 Kelvin. So the correct option is option B. And last one, MCQ number 40. The specific heat of a gas will be negative at isothermal process, adiabatic process, in a case of cylinder, if expansion rate larger than absorption rate of heat. So the correct option is option C.